ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो एवरीवन, ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांड बोलता है में हम लीडिंग मार्केटर्स, ब्रांड मैनेजर्स, CEOs और उन सारे लोगों से बात करते हैं जो एक ब्रांड को बिल्ड करते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे ये वो ब्रांड है जिसको हम अपने रूटीन में देखते तो जरूर होंगे, लेकिन शायद हमने कभी इसको इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन हम आज बात करेंगे उस ब्रांड के बारे में बहुत डिटेल में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर प्लस पाकिस्तान। और पावर प्लस से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पावर प्लस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीन शेख। अस्सलाम वालेकुम दीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सारा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके दीन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन ब्रांड बोलता है। सो ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में पता करेंगे और उसके बाद हम आपके ब्रांड के बारे में पता करेंगे, विच इज पावर प्लस। सो दीन, आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड देन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो आपका ये कामयाबी का सफर किस तरह से शुरू हुआ? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि मैंने अपने O लेवल्स और A लेवल्स कराची ग्रामर स्कूल से किए। उसके बाद जो है कुछ साल यूनिवर्सिटी के मैंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे। उसके बाद इंग्लैंड में मैंने मास्टर्स डिग्री की मार्केटिंग में इंपीरियल कॉलेज लंदन से। एंड उसके फौरन बाद से आई हैव बीन एसोसिएटेड एंड अटैच्ड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट्स ऑल्सो ए फैमिली कंसर्न। So, अब यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए हैं 12-13 साल। वाओ, सो इट्स योर फैमिली बिजनेस, राइट? और इससे पहले लाइक व्हाइल यू वर डूइंग योर डिग्रीज एंड ऑल, तो आपने कभी भी जॉब मार्केट में जाने का नहीं सोचा? जॉब मार्केट में जाने का सोचा तो था मैंने, लेकिन फैमिली प्रेशर्स की वजह से दिस वाज समथिंग आई हैड टू डू राइट अवे, राइट आफ्टर। So was this something that you were passionate about? Depend करता है on what your definition of passion is and being passionate is. I do enjoy working in the field of marketing. I do enjoy product development. I do enjoy the whole ecosystem behind working in the consumer goods sector. Then yes, the answer is yes, I am passionate about this. तो फिर हम बहुत clearly कह सकते हैं कि ये आपने by choice select किया, working for your family business. I wouldn't say it was by choice, but I am glad I made this choice regardless of the circumstances which made me make the choice. Okay, nice, wonderful. So आपको पावर प्लस में अब कितने साल हो चुके हैं? 13 साल। Alright, and how did it start? शुरू से हमसे शेयर करें किस तरह का रहा आपका experience working for this brand? So I'll give you a little bit of a history on the parent company of Power Plus. Parent company जो है इसकी Progressive Traders Private Limited है। Up until 97-98 they were distributors for Kodak Film in Pakistan. So top management ने उस वक्त decide किया था that we are not going to work with an American company anymore because they repatriate most of their profits and we are going to start something of our own. So the idea came into our mind that we should enter the business for battery cells. Duracell के जो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पाकिस्तान में, वो पर्सनल जानने वाले थे मेरे फादर के जो कंपनी चला रहे थे, जिन्होंने फाउंड की थी। एंड उन्होंने आइडिया दिया था कि आप बैटरी सेल्स की इंडस्ट्री में आए। लोकल प्लेयर इस वक्त कोई भी नहीं है, जितने भी ब्रांड्स हैं सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। सो देयर इज प्लेस इन द मार्केट। सो दे टॉट अस अ फ्यू थिंग्स वी नीडेड टू नो अबाउट द बैटरी सेल बिजनेस। एंड और ये कौन से ईयर की बात है? 98 पे हैं हम लोग। 98 ओके। 98 में वी लेफ्ट कोडाक की डिस्ट्रीब्यूशन एंड 99 में वी लॉन्च्ड पावर प्लस। Oh wow, so it's an old product actually. It's 24 years old now and slowly gradually we added products. 99 में we started with battery cells. 2003 में we added mosquito coils. 2005-06 में we added insecticide spray. 7-8 में we added soaps as well. We added shoe polish in 2006-07 as well. So we've got now a multiple variety of products under the Power Plus umbrella as well as the sister brand Paradise. That's great, that's great. I think these are really a lot of products. I'm sure इन सारे products पे working, और मतलब किस basis पे आपने decide किया कि ये products ही produce होंगे from your parent company? It depended on the market situation at the time. For example, आपका जो है insecticide spray जो हो गया, insecticide spray जो था, it was
actually giving good margins at the time. Even after all the costs वगैरह निकाल के और सारी आपकी taxes वगैरह लगा के it was generating a good market. And जब आपका season आता है मच्छरों का, be it in Sindh, Punjab और KP के, it yielded a good return on investment. It was a product that was at that time was just dominated by Mortein and Baygon. और कोई players थे ही नहीं market में. Slowly, gradually now you've got a very crowded market. You've got a lot of players in the market. You've got a lot of local brands which you've probably most of people haven't heard of as well. So it was a product that yielded good returns. And insecticide spray is an insecticide product that you can't just keep standalone. आपको complementary products भी चाहिए. उस जमाने में mat tablets भी होते थे, mat heaters अगर किसी को याद है लोग use करते थे. We had that. आपका vaporizer भी था, and आपका mosquito coil भी we had to eventually add a few years in, because it's one of those products you have to sell as a combination. You can't sell one and not sell the other variants जो हैं insecticide products में. ये तो वही हिसाब हो गया. आपने for example air fresheners रखे हुए हैं. Air fresheners में you don't have enough SKUs to cater to all the different taste buds. सबके taste buds अलग होती हैं. जिस तरह taste is subjective, महक is also subjective. That's true. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, क्योंकि पीपल यूजली इस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं होते, या दे आर ओके विद any kind of air freshener they buy or any kind of insecticides they can look for. आपके buyers में भी काफी categories हैं. We live in an era where segmentation plays a very big role as far as reaching out to your customers is concerned. Awam that was like, we want a particular brand and a particular fragrance. They relied on what was available. So our differentiating factor, I would say, would be not so much that we spent on advertising and promotional activities, but rather distribution. Our good distribution network across Pakistan made sure our products were available in the right relevant markets. Our target market was SC class, B, C and D. It wasn't your A and your B plus. Okay. So जहाँ पे B, C और D वाली market होती है, they don't focus so much on advertising. If anything, some research has suggested that they see products that use advertising on broadcast media like television as premium expensive products, and those heavy marketing costs are passed on to the finished product selling price. So they focus on products which are little less known and are available in the local LMTs and the local general trade. General trade is your local Karyana store. LMTs are your modern supermarkets. All right. Very interesting to know all this. So हमारी बात हो रही है Deen Sheikh से, who is the managing director of Power Plus Pakistan. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. डीन से और भी बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट पावर प्लस ओवरऑल एज वेल. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं डीन शेख, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर प्लस पाकिस्तान. सो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पावर प्लस के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा. मेरा नेक्स्ट सवाल डीन आपसे ये है कि आपकी ओपिनियन में पाकिस्तानी मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग कितनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है, या कितनी ज्यादा डिफरेंट हो गई है पहले के जमाने में और आजकल के जमाने में? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Brand building in Pakistan has actually come a long way, to be very honest. There was a time brands and the whole idea behind branding wasn't given a lot of importance, to be honest, because you didn't have a lot of mediums for marketing communications before. Pakistan television, PTV, didn't come around till the 1960s. For a very long time, brands were reliant on Radio Pakistan for many decades to get their message across, and there were very few brands that actually, created presence in the minds of the consumer. कुछ मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ. For example, Dentonic is a brand that goes back many decades. Oh yes. It relied on radio quite a bit to become a household name. People still remember all the campaigns of Dentonic. But nowadays it's a brand that's almost gone extinct. On top of that, another example I'll give you is, for example, आप ये तिब्बत साबुन ले लें. Yes. Tibet Sabun is one of the oldest, in fact, currently still operational, the oldest soap manufacturer in Pakistan. They relied on radio quite a bit as well. Tibet Snow Cream, Tibet Sabun. So
for the older generation that grew up with radios, those are the brands that they associated with. फिर आपके second phase में आए early days of PTV, which went on till the 90s. It wasn't till the 90s that the market got deregulated, more channels came in. And so PTV पे जो बचपन में लोगों ने इश्तिहार देखे जिन brands के, for them they became the brands. Yes. And they are still used, those brands, even though they don't advertise anymore. Like I'll give you an example. Do you remember Black Cat talcum powder? Oh yes, I do. Black Cat talcum powder, you still find it at cosmetic stores, you still find it all across Pakistan, but unless you knew that brand exists, you wouldn't know that brand exists because they don't advertise. They don't advertise anymore, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने इतनी strong advertisements कर ली कि आज तक लोगों के mind में अभी तक retained है. This brand is very much, it has a very high recall value according to my opinion. You have to always remember that branding is about a promise. It's a promise that you make to the customer कि आप जो चीज का दावा कर रहे हैं वो डिलीवर करेंगे. Branding is all about a promise to the customer कि आज मैं ये चीज लेके जा रहा हूँ, ये जो benefits मुझे claim कर रहे हैं कि देंगे, जो इन्होंने जबान दी हुई है brand ने. That's why hence I would say brands बोलते हैं, क्योंकि जब ब्रांड जबान देता है कि आपको ये चीज डिलीवर मिलेगी और जब वो ऑनर होता है तो एक प्रॉमिस अपहोल्ड हुआ है. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दैट्स हाउ ब्रांडिंग हैज इवॉल्व्ड. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रांड. Now everyone knows about Sensodyne as a tooth, but there was a time it was all about Medicam as a brand. Medicam used PTV का ज़माना as well to get the message across that our toothpaste is for those with sensitive teeth, or those जिनके gums bleed करते हैं, those who are afraid of going to the dentist. Yeah. So that's how Medicam is still a very strong brand today. Yeah. As far as us and our brand journey is concerned, it's a bit of a complicated process because again, our focus was on distribution. So how we established our relationship with our customers was that, look, we're going to give you money back guarantee. आपको हमारी चीजें नहीं पसंद आती, हमारे products नहीं पसंद आते, so you're going to have money back guarantee. You can always return it to us. शुरू के 10 सालों में we relied a lot on money back guarantee. And this also wasn't to the final customer, this was to the distributor. And the distributor also was obligated कि अगर उसके पास returns आ रहे हैं customers से, वो माल वापस हमें भेजे ताकि हम check कर सकें quality क्या है. That's when it created a lot of brand identity. We became that brand which was trustable, reliable, and अगर ना पसंद आए, the customer can always send it back if it's a faulty product. And again, our relationship with branding अब जाके थोड़ी इसने full spectrum में picture ली है. For the longest time, we were also targeting your non-brand conscious audience. You have to remember your urban metros, Pakistan, Karachi, Lahore, Pindi, Islamabad. These are urban metro centers where the urban middle class buyer is very brand conscious, are very specific about what brands they trust, where they want to spend their money. So most of our success relied on secondary cities like Multan, Faisalabad, Gujranwala, Hyderabad, Quetta, Peshawar, where our brands had good presence. Alhamdulillah, we have good presence in Metro Pakistan as well, and because of our activities on social media, digital as well as transit media, a lot of people might have seen our buses, the bus branding. Yeah, the buses, your Karachi transport buses, those red buses carrying our branding. So that's given the perception that this brand is now really doing something. It's out there, it's noticeable, it's visible, and that creates brand equity, that creates pulling power. So as a result of which, your customers are going to demand Power Plus naam leke, and आपके distributors, wholesalers who are very important and strong players in Pakistan, they will also ask for the product. बिल्कुल. सो ब्रांड बिल्डिंग आपके लिए शुरू से ही इम्पोर्टेंट थी. लाइक जैसे कि आपने कहा कि शुरू में पावर प्लस का मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स. लाइक यू सेड, SEC A को टारगेट नहीं करते थे, B, C एंड बिलो को टारगेट करते थे, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं. लेकिन अब आपकी बातों से लगता है कि आप लोगों ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया है, क्योंकि लाइक यू सेड कि ब्रांड कॉन्शियस लोग जो थे वो आपकी टारगेट ऑडियंस पहले नहीं थे, लेकिन अब हैं. नाउ पीपल हैव बिकम स्मार्टर. लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं. हर प्रोडक्ट को लेने से पहले लोग सोचते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए, बिकॉज उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द मार्केट. सो क्या कस्टमर परसेप्शन की वजह से आपने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की, जस्ट टू यू बिल्ड योर ब्रांड एंड मेक इट मोर एक्सक्लूसिव? यू कुड से दैट्स पार्शियली ट्रू, बिकॉज आपकी मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई थी. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी भी इंसेक्टिसाइड्स में आपका मॉर्टीन का और बेगॉन का कंबाइंड मार्केट शेयर 65 to 70% के करीब. That's heavy.
and as a result of which आपके बाकी जितने भी local players हैं they have to share the remaining 30-40% of the pie. And because जितनी आपकी crowded हो गई है market, कुछ fully locally made goods हैं and there are a lot of imported goods as well, so you have to compete for the same consumer pie, that same segment of the pie which is not brand conscious, but again उस segment में भी आपको थोड़ा बहुत brand recall, brand identity, brand association की required है ताकि you break through the clutter. Distribution network तो सब अच्छा बना ही सकते हैं eventually, and once you're on the shelf you're not a big brand from an MNC. There's just too much variety. It's like जिस तरह आपको मसालों का सेक्शन मिलता है सुपरमार्केट्स में, there's just too many brands, too many products. The shelf space is mostly dominated by Shan and National. तो वही हिसाब तकरीबन हर प्रोडक्ट और हर SKU में आ जाता है कि a few big brands dominate the entire spectrum. जो smaller players होते हैं they have to compete with other smaller players. Sometimes with even the bigger fish as well. Sometimes what MNCs do is they offer such lucrative schemes to the intermediaries along the way, the distributors, wholesalers, कि they're able to push out a lot of the small players from the market as well. So brand identity के लिए, ब्रांड रिकॉल के लिए, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ब्रांडिंग एक्टिविटीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओह यस, डेफिनेटली, स्पेशली हैविंग कंपेटिटर्स लाइक मॉर्टीन जो कि एक हाउस होल्ड नेम है, और मॉर्टीन ने तो कितना अपने एडवर्टाइजमेंट से फोकस किया है. एवरी नाउ एंड देन हम मॉर्टीन के एड्स देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं. इतना ज्यादा उन्होंने फोकस किया है अपनी प्रमोशंस पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे, कि वो हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं ऑलरेडी. बट अगेन मैं इन माई ओपिनियन आई थिंक इंसेक्टिसाइड्स वो प्रोडक्ट हैं जिसमें शायद लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं होंगे. दैट्स व्हाट I personally think. It's one of those products which is like good to have. अगर आपके पास Mortein नहीं है, you can go for Baygon or you can go for Power Plus or any other insecticide. शायद इसमें brand consciousness को build करना मेरे ख्याल से चैलेंजिंग तो है, बट एट द सेम टाइम मे बी इट्स नॉट रिक्वायर्ड. It is required. We don't compete with Mortein and Baygon. We've made it a policy, company policy. I can't speak for other local players. Yeah. But our company policy is we don't take on the MNC products. Okay. Because competing with your MNC is like shooting yourself in the foot because of how deep their resources are. And if you want to stand out of the clutter, you need to build a new market. Build a different market. You not only need to build a new segment for yourself, but you also need to have that brand identity which makes you stand out from the clutter. There's just too much on the supermarket shelf for the customer to choose from, and आजकल के आपके customers भी पहले से थोड़े intelligent हैं than they were some generation ago. Oh yes, like you said, digital marketing का era है, so उस हिसाब से तो customer is the driver of all the brands. Customer खुद से decide करता है उसको क्या करना है. आज का customer बहुत ज़्यादा smart है as compared to previous years. Yes, that's because social media, the internet is educating them about different brands, different products. So that's how things work. बिल्कुल सही कहा. So हमारी बात हो रही है Deen Sheikh से, who is the managing director of Power Plus Pakistan. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बातों को कंटिन्यू करते हैं. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं डीन शेख, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर प्लस पाकिस्तान. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने पावर प्लस के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें की. डीन, मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि अभी तक पावर प्लस को आपने किस तरह से प्रमोट किया है इन रीसेंट ईयर्स, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजिंग करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है. बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं मार्केट में, बहुत नए मीडियम्स आ चुके हैं, डिजिटल मीडियम्स लाइक यू सेड, सोशल मीडिया एंड ऑल. सो रिसेंटली आप लोग पावर प्लस के लिए कौन सी कैंपेन्स कर रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रमोशंस कर रहे हैं? तो सारा, जैसे कि मैं आपको ये कह रहा था कि डिस्पाइट डिजिटाइजेशन एंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया, आप कन्वेंशनल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम अ वेरी अंडररेटेड स्ट्रैटेजी एंड टूल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इज पब्लिक रिलेशंस. ओह यस. पब्लिक रिलेशंस में आपको जितनी कवरेज और फायदा मिलता है, आपको उतना सारा डिजिटल कंबाइंड ब्रॉडकास्ट मीडिया कंबाइंड से उतना फायदा नहीं कभी कभार मिल सकता जितना आपको डायरेक्ट कंज्यूमर एंगेजमेंट से, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग से मिलता है. मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लास्ट ईयर लाहौर
लाहौर में हुआ था बहुत ही ग्रैंड किस्म का मसाला टीवी का फैमिली फेस्टिवल, फैमिली एक्सपो, एंड वी वर प्रेजेंट देयर ऑन बोथ द डेज. लास्ट ईयर मार्च के महीने में हुआ था. इस साल बिकॉज वी डिडंट पार्टिसिपेट, बट नेक्स्ट ईयर वी विल पार्टिसिपेट अगेन. सो लास्ट ईयर आपने कौन से प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रमोट किया? All of them. We had merchandisers, we had consumer engagement individuals as well. So it was a proper activity. If you wanted to buy our products, you could do that. If you wanted to buy our products in bulk, you could do that. If you wanted to come talk to us, we had interactive games as well where you could throw the dart and just product पे आपका spinning पे dart लगा, you could end up winning that product. Okay. We also had mascots as well. So a lot of children came and got pictures taken with our mascot. हमने अपनी shoe polish का mascot बनाया हुआ था. Oh wow. Which walked around the entire Johor Town Expo Center in Lahore. Nice. And this year we also got a mascot made in the shape of an insecticide spray can, the yellow color ka can. And we've also taken that mascot as well as the shoe polish wala mascot, and we've gone to your big LMTs in Karachi, jaise Imtiaz supermarket hai. Their children have come and gotten the picture taken with the mascot. Their people have come up and asked us about our brand. So it's created brand awareness. अब जाके directly consumers के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, and you're telling them, look, we exist. This is, and we care about the customer. That's why we are here. आप लोगों से मिलने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे गपशप करने के लिए. And as far as digitization is concerned, we have also adopted social media. We've used Facebook and Instagram as well. We've used search engine optimization as well. And we've also used sponsored ads as well in order to ensure that we reach the audience जो हर वक्त अपने स्मार्टफोन पे बैठी रहती है, हर वक्त इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठी रहती है. और इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है, फॉर एग्जाम्पल us using Facebook and Instagram as well as YouTube पे sponsored ads, हमें डिस्ट्रीब्यूशन की और सेल्स की रिक्वेस्ट आई हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया चैनल्स. इनबॉक्स पे मैसेजेस आए हैं कि मैं XYZ टाउन से बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए, मैं XYZ शहर के XYZ मोहल्ले की दुकान से बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे दुकानदार हूँ, मैं आपका सेल्स पर्सन अब मेरे एरिया में आता नहीं है, तो मुझे आपका माल चाहिए, अब मुझे इतने कार्टन भेज देंगे. So that's contributed a lot to our sales. And do you have an online shop as well? Yes, we do, Sarah. We have an online shop through Daraz as well, and it's under the Daraz Mall category. Wonderful. So if those who are interested in trying Power Plus products out, we do run promotional campaigns quite frequently, and we do run special discounts especially for our Daraz customers. We also sell through other outlets like Crave Mart. We recently activated Crave Mart, so जिन लोगों को Crave Mart से shopping की आदत है, they too can find us as well. Oh nice, that's great. Good to see कि e-commerce का इतना usage आप लोग implement कर रहे हैं for your brands, for all your products, just to make sure कि आपके products available हों for customers anywhere in Pakistan. Do you have presence outside Pakistan as well? As of now, we don't have presence outside. Any plans? Currently हमारे plans नहीं है because आपकी पाकिस्तान की मार्केट जो है, इट इज अ गुड लुक्रेटिव मार्केट टू केटर टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. तो अगर आप इसी मार्केट को केटर कर लें सेटिस्फैक्टरली, तो आई वुड से दिस इज अ गोल्ड माइन. आपके you make up good numbers in terms of volumes because of our population, because of how many people live in the urban centers now. तो आपके numbers, volumes अच्छे रहते हैं. So we never really thought about going for export oriented ideas at this point. Who knows, in the future we might think about it. Alright, nice. So you have so many products. Power Plus कितने सारे products हैं. आपके हिसाब से आप लोगों का स्टार प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है मार्केट में अभी तक? अभी तक हमारी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान तो ऑब्वियसली हमारे बैटरी सेल्स की तरफ से रही है. हमारे इंसेक्टिसाइड्स आर द सेकंड मोस्ट रिकॉल्ड प्रोडक्ट्स, बट द वन प्रोडक्ट दैट आई एम वेरी particularly proud of is our liquid shoe polish. Oh nice. It comes in two variants, black and brown. Majority of our buyers of shoe polish are school going children की mothers. मतलब वो this is also an interesting example of a product. Your buyers are different from the end users. This is something very important in the field of marketing. Knowing who the end user is, knowing who the buyer is. The actual buyer is different then. The actual buyer can sometimes be different. At the same time, आप ये भी देखो कि उसे कहते हैं it's not your adults who are the end users. Our research has suggested कि जो adults हैं, जो men हैं especially
adult men, जब वो काम पे जाते हैं they actually don't use shoe polish on their shoes. वो कभी चलते फिरते वो पॉलिश वाला हो सड़क पे, उससे करवा लिया तो करवा लिया, अदरवाइज कपड़ा लेके बस जूता साफ करने वाला रिवाज है among male adults in this country. It's स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिनकी मदर्स को होता है कि ये स्कूल में अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, उनके टीचर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन हो, उनके कॉलीग्स के सामने अच्छा इंप्रेशन हो, क्लासमेट्स के सामने अच्छा इंप्रेशन हो, हेंस जूतों का चमकीला होना लाजमी है. इसीलिए आई थिंक यू वर्कड ऑन दोज मैस्कॉट्स फॉर किड्स, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर दिस शू पॉलिश, बिकॉज यस व्हेन ऑल ऑफ अस वर किड्स हमारे लिए शू पॉलिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उस टाइम पे. एज वी ग्रू अप वी रियलाइज कि नो इट्स नॉट अ बिग डील, बट बच्चों के लिए तो आज भी आई थिंक किड्स शुड बी योर प्राइमरी टारगेट मार्केट फॉर शू पॉलिश. Yes, we have done some PR campaigns in schools as well. कुछ स्कूलों में जाके भी in regional towns like Sakkar and Hyderabad, we have done school के अंदर activities as well where we've nice. That's collaborated with the school administration, the principal and बच्चों के जूते साफ करवाए हैं. Good to see all these initiatives coming from Power Plus. So Power Plus के products तो मुझे अब समझ में आ गए कौन से हैं, कितने सारे हैं, कितने अच्छे. I'd like to buy a few of them as well which are relevant to me. उसके साथ साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि पावर प्लस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज अ कंपनी? Challenges as a company are quite a few because given that the average age of your staff members is above 45, so old school सोच, old school mentality के लोग बहुत ज़्यादा हैं. So when you've got senior people over there, people who are at least Gen X or baby boomers, it's very hard to work with them. There's so much resistance to change. Yeah. They've seen a different world and they're like the rest of Pakistan. They've been caught off guard by changes in technology, changes in consumer attitudes, changes in trends as well. So for example, it was very difficult to convince the top management कि आप जो है digital के लिए funds रिलीज करें. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द मैनेजमेंट कि आप ई-कॉमर्स के लिए बजट अलाउ करें. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द मैनेजमेंट दैट वी नीडेड अ ब्रांड मैनेजर. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी डिड नॉट हैव अ ब्रांड मैनेजर. Alhamdulillah, we've had one now for 2 years and now he's got an entire team working under him as well. It took a lot of time to convince them, but now they realize this was worth the investment. Definitely. I think branding की, marketing की जो significance है वो अब जाके top management को अगर समझ में आई तो I think it's never too late कि आप जहाँ से भी start कर रहे हैं, but main focus is on brand building कि हमें brand build करना है for the target market that we have, and this is something which we cannot ignore. I think that was a very good move done by your top management, जिसकी वजह से now you have a marketing department, you have brand managers. I think definitely इन लोगों ने आके initiatives लिए होंगे जिसकी वजह से आपके results definitely improve हुए होंगे overall. Most companies में top management ये भी सोचती है before investing in marketing activities कि there's an opportunity cost of doing everything. For example, अगर मैं 5 करोड़ रुपए marketing budget के लिए रिलीज कर रहा हूँ, यही 5 करोड़ रुपए मेरे inventory में भी काम आएंगे, इंश्योरेंस में भी काम आएंगे, मेरे logistics के bills में भी आएंगे, factory overheads में भी काम आ सकते हैं. So do I really need to spend 5 करोड़? So you need to convince them कि आपको foreign ROI नहीं tangible नजर आएगा. Of course, it takes time. If they're not convinced, it can be put off for another year. It took us a couple of years to convince them to start releasing funds for branding and marketing activities beyond sales promotions, beyond push strategies. Marketing में push and pull strategies दो तरह की होती हैं. Pull is where branding comes in. Push is where promotions and financial incentives come in. Like buy one get one free scheme या 10% off, 5% off, उस type की schemes. So have you been working on both ends या अभी सिर्फ pull strategy पे ही focus है? इस वक्त focus pull पे है, but you can't abandon push as well because at the end of the day in a market like Pakistan, your distributor, your wholesaler is king. Your wholesaler and distributor can make or break the success of your product. At the end of the day, you all want to make money as well. That's why we're in business. Of course. So अगर आपका wholesaler distributor जो है आपका माल नहीं उठा रहा, वो आपका माल तभी उठाएगा अगर आप उसको ऐसी schemes दें which make sense to him, where he thinks, where he is incentivized, where he or she thinks they can get the return on investment. उनको वारा खाता है. That's the term we use. वारा खाता है. What's that? उनको value लगती नजर आती है या नहीं नजर आती. Okay. So उनको वैल्यू नजर आएगी, वो आपका माल उठाएंगे, आगे दुकानदारों पे पहुंचाएंगे, both LMTs में as well as general trade. So in order to encourage them, you need to rely on push strategies. Push में आप कुछ भी कर सकते हैं. आप 10% off दे दिया, 20% off दे दिया, और you could give an inventory based
पुश स्कीम, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10 कार्टन ले लें, आपको 1 कार्टन फ्री, या 15 कार्टन हमसे ले लें 2 कार्टन फ्री, या आप 10 कार्टन कॉइल के ले लें, हम आपको 1 कार्टन उसे कहते हैं वेपराइजर का या मैट का फ्री दे देंगे. You know, stuff like that where they can manage their costs and then pass it on to retailers. Okay, that's great to know. So हमारी बात हो रही है डीन शेख से, who is the managing director of Power Plus Pakistan. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करते हैं. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं डीन शेख, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर प्लस पाकिस्तान. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. सो डीन से बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, आई थिंक अबाउट देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी, पावर प्लस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पावर प्लस एज अ ब्रांड. नेक्स्ट सवाल मेरा डीन आपसे ये है कि हमने पावर प्लस के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, अब कुछ अपने बारे में बताइए. यू एज अ पर्सन, व्हाट डू यू लाइक टू डू? आपके क्या शौक हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज, इस बारे में बताएं कुछ. I like food, so you will find me to be quite the foodie. Okay. Don't be nice. surprised if you bump into me at a famous restaurant. I also like to travel. I think I have traveled to 15-16 countries so far. Oh wow, commendable. And I would say probably my favorite cities to visit overseas are London, Istanbul and Sydney in Australia. Great. Other than that, I teach part-time as a visiting faculty at Zabis, which is I've been doing for 3 years now. Oh, wonderful, wonderful. So you like to teach as well. How is the teaching experience going so far? It's been interesting. Generation Z are a very different product altogether. Very different class of students altogether. Bilkul. They are a lot more tech savvy. They have a lot more information and a lot more knowledge. So you can't take them lightly. You can't take them for granted. You need to plan intelligently on how to teach them, how to engage with them. I think Gen Z का mindset बिल्कुल different है और मेरे ख्याल से आजकल टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग होती है. जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकल के यूनिवर्सिटी में जाके जेन जी से बात करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि जेन जी बहुत डिफरेंटली सोचती है. दे आर नॉट लाइक अस, जिस तरह के स्टूडेंट्स हम हुआ करते थे. जेन जी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, विच इज अ होल लॉट ऑफ चैलेंज, बिकॉज वही जेन जी आगे चल के हमारी टारगेट ऑडियंस बनेगी फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स. Gen Z are very different from millennials. Millennials like you and I, we grew up with a certain set of expectations, ideas and values. एक और चीज which distinguishes Gen Z from a lot of millennials are some millennials had Gen X parents, some millennials had baby boomers as parents. Yeah. So cultural values also differed quite a bit, and as millennials we saw so much massive changes in our life. 2008-9 में the world saw a global financial crisis. That was the year most millennials either finished university or they were still at university. So growing up they were told आप XYZ profession में जाओ, आपकी life set है, you won't have to worry about a future, a career, paying your bills. Like आप nursing में चले जाओ या chartered accountancy कर लो या engineering कर लो. All of a sudden millennials woke up to the realization that there are no certainties in life. There's no employment security anymore. Yes. There's no 9 to 5 anymore. शो कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है वर्क में, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है. एंड मिलेनियल्स हैड, इवन दो दे हैड अ लॉट ऑफ कॉमन वैल्यूज, बट अ लॉट ऑफ देम हैड वेरी डाइवर्स वैल्यूज एंड अ लॉट ऑफ देम हैव हैड देयर एक्सपेक्टेशंस नॉट मेट, देयर रियलिटीज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दे वर टोल्ड अबाउट. Gen Z on the other hand, they have seen mostly chaos in their life. Yeah. So their expectations are not very high. They're ambitious, they're driven, but at the same time they're demanding as well. They're demanding, okay, something which you won't find among millennials but you'll find among Gen Z. Gen Z practice something called quiet quitting. Quitting, yes. Yeah, quiet quitting is they value work-life balance. अगर उनको आपने promise कर दिया है in the psychological contract कि आपकी 10 घंटे या 12 घंटे की रोज की जॉब है, 13वें घंटे में वो इनकार कर देंगे काम करने से. If you told them हमारे यहाँ working weekends का culture नहीं है, they are not going to work on weekends. Millennials को आप जो है थोड़ा बहुत blackmail करके overwork करवा सकते हो. And millennials have seen so much insecurity and uncertainty कि वो सोचते हैं कि अगर we don't work the extra long hours, or we don't go above and beyond our job description and responsibilities, we are screwed. Okay. So फिर as a teacher जब आप Gen Z के साथ को lecture दे रहे
होते हैं तो आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स होता होगा. क्लास का डेकोरम एंड ऑल ऑफ दैट, क्या स्टूडेंट्स में अभी भी वो डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंसी है जो पहले होती थी? One thing where Gen Z is lacking behind millennials are millennials were still respectful of authority, their Yes. seniors, their teachers. Gen Z are not. Gen Z क्लास में फोन बजता है, फोन उठा के बातचीत करना शुरू कर देते हैं. Yeah. They would just randomly get up and walk out of the class as if that is all they know. As if that is allowed. Yeah, that is all they know. That is normalized. And पीछे के backbenchers जो हैं, they are very very chatty. वो इस तरह भी नहीं करते. हमारे ज़माने में भी backbenchers थे जिनको बातचीत का शौक था, लेकिन they were very discreet about it. वो whisper करते थे. अब तो backbenchers जो ऐसे बात करते हैं बैक रो पे जैसे कि वो अपने लिविंग रूम में बैठे हैं. सो टीचिंग देम, गेटिंग देम टू स्टे फोकस्ड एंड इंटरेस्टेड इज अ चैलेंज. दे आर ऑन देयर फोन्स आल्सो द होल टाइम इन क्लास. आपको उनको डांट के फोन पढ़े करवाना पड़ता है. वी डिडंट हैव दैट इशू बिकॉज़ हमारे जमाने में आपका 3G 4G इंटरनेट था नहीं. आपका SMS बहुत महंगा था उस वक्त. आई थिंक ₹5 का SMS था व्हेन वी वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. सो Gen Z always on their phone, so getting their engagement plus making them be respectful for authority. Gen Z is fighting back. Millennials, we did not fight back against authority. तो Gen Z के लिए culture है. There's something that I'm very critical of in Pakistani culture कि यहाँ पे hierarchy को लेके rigidity बहुत ज़्यादा है. People older or senior than you forcibly make you respect hierarchy. Gen Z is rebellious from the get-go. Alright. बिल्कुल सही कहा. थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन एज अ टीचर ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू डील विद द किड्स, बच्चों के साथ उसी तरह से जैसे कि हमारे टीचर्स ने हमेशा काम किया, बहुत परसिस्टेंस के साथ और बहुत रिस्पेक्ट. इसके साथ साथ डीन, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे इसी से रिलेटेड है. वो ये है कि जो भी फ्यूचर मार्केटर्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आपका की मैसेज क्या होगा? और वो लिसनर्स जो अभी तक हमारा शो सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? Are we talking about fresh graduates or those about to graduate? About to graduate. उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप कोई भी जॉब ऑफर आए, डोंट बी अफ्रेड टू टेक इट अप, डोंट बी शाई टू टेक इट अप. आपकी फील्ड में कोई भी छोटी मोटी जॉब हो, टेक इट. यू नीड टू गेट योर फुट इनटू द डोर एंड यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर CV. यू नीड टू स्टार्ट building your work experience. Be open to it. There are some sectors though I would recommend avoiding. Like for example, आप pharma में ना जाएं. Pharma sector से migrate करना मुश्किल हो जाता है to other sectors. Like pharma से FMCG में आना या agencies में जाना difficult हो जाता है. But otherwise, but for specialization they can. Unless you of course are passionate about working for a pharma company. Let's suppose GSK is a very big brand and you are passionate about the work culture they offer, which is excellent from what I'm hearing. Other than that, I would say just take whatever opportunity comes, even if it's marketing research, even if it is PR, even if it is copywriting, script writing for advertising content. Take it. You need to put your foot in the door. And आजकल जिस तरह के economic हालात दुनिया में चल रहे हैं, your big tech companies are doing layoffs as well. So you are blessed if you have an economic opportunity. At the same time मैं ये भी कहूँगा कि if your mind is entrepreneurial, आपका एक कारोबारी ज़हन है as a marketing graduate. If you've got a big business idea and you have access to funds, go for it. Don't waste your time. Go for that entrepreneurial idea. If you are a creator of a business, creator of economic activity, you're creating opportunities for others as well, not just for yourself. और उसका एक ripple effect होगा. Let's suppose you start off a small online business selling ties. आप start तो अकेले करोगे, but as soon as you start making money, you're going to hire 2-3 people. Before you start making a bit more money, you're going to have partnership agreements with certain bricks and mortars, retailers. आपका माल बिकेगा. You're going to look for additional suppliers. It's going to have a ripple effect. If you've got an idea and you've got access to capital and you think you can make it work, go for it. But अब ये चीज याद रखो, not everyone is the next Elon Musk, not everyone is the next Mark Zuckerberg. So don't come up with an idea where you're just burning cash. You should think this through, think long term. A lot of startups in Pakistan, for example, fail because there's just short term thinking. There's that mindset के आज हम पैसा डालेंगे, कल हम billionaires बन जाएंगे. That's not how strategy works, and you need to understand your market as well. Of course. So, for example, a lot of tech-based services and apps come
to Pakistan and they depart, it's not the failure of their marketing department as per se, it's the failure of their strategic vision that they're not able to understand कि आपका market size बहुत छोटा है in Pakistan for these refined tech-based services. Alright, that's a wonderful message. I'm sure बहुत ज़्यादा learning रहा होगा ये message for all our listeners जो हमारी शो सुन रहे हैं अभी तक और जो future marketers हैं जो marketing में अपना career pursue करना चाहते हैं या जो business men बनना चाहते हैं in the near future. So very enlightening. Thank you so much, Deen, for coming to our show today because this brings us to the end of the show and I'd really like to thank you for taking out time. आपने इतना busy schedule से time निकाला हमारे शो के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you for having me, Sarah Hasnain. It was a pleasure being on अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. थैंक यू सो मच. सो लिसनर्स, आई होप आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा. आप अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें हमारे फेसबुक पेज पर. इसके साथ साथ ब्रांड बोलता है मैं आप लोगों से अभी इजाजत चाहती हूँ. अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तो आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.